Hi, this is Aikta, and I'm aviation and hospitality veteran. I worked as a senior cabin crew with Emirates and Air India, and also worked with prestigious academies and organizations for almost now 22 years. I have trained students, I've helped them to make their careers in aviation and hospitality industry. एयरलाइन और फ्लाइंग हमेशा से मेरा एक पैशन था और उसी पैशन की वजह से मेरी लॉयल्टीज़ और मेरा झुकाव इस इंडस्ट्री की तरफ बहुत है. एंड व्हाई आई एम हियर टुडे इज़ बिकॉज आई फील बैड when I see a lot of candidates and students getting fleeced by these vendors and these radical individuals and groups by asking for money and getting job. Guys, I just want to tell you कि एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि आपका पैशन और आपकी नॉलेज और आपकी ग्रूमिंग और आपकी कम्युनिकेशन स्किल यही आपको इंटरव्यू क्रैक कराता है. अगर आप ये सारी चीज़ों में अपने आप को एक्सेल करते हैं थ्रू सम ट्रेनिंग, then I don't think so that you need to go through these fraudulent companies or fraudulent guys and groups. So that is the reason today I'm here to welcome you all for this free seminar that I do for the candidates and for students, where I tell them and make you aware of this industry. इस इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका अगर ये पैशन है, आप अगर इसमें जॉब करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, आपको क्या सीखना है. क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ और मैंने बहुत साल एज अ कैबिन क्रू, एज अ सीनियर कैबिन क्रू, आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई हैव बीन इन द एरोप्लेन, आई हैव इंटरैक्टेड विद पीपल. सो विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ, जहाँ पे मैं उनको अवेयर करती हूँ that you should be on the right track, you should get the proper guidance, you should be aware of what is happening in this industry and how you can crack the interviews with the HR. HR जब आपके सामने बैठते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है और आप उनके दिमाग को कैसे रीड कर सकते हैं उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. What are the do's and don'ts? So I welcome you all for this free seminar. Come here, get aware and take the guidance from me personally, and I will help you the opportunities and the future prospects which are coming.